हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द यूमिरो। मेरा नाम है शिवांगी और इस बार हमारी सीरीज लेट्स गो लोकल में हम आपके साथ एक ऐसी अमेजिंग स्टोरी शेयर करने वाले हैं, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जो अपने काम से ना सिर्फ लोगों की हेल्प कर रहे हैं बल्कि यूथ के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है। तो आज की स्टोरी होने वाली है इंद्रप्रीत की। तो क्या है उनकी स्टोरी, ये देखने के लिए you have to watch the video till the end and don't forget to like, share and subscribe to the channel and let's start today's journey and today's story. सबसे पहले वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू यूमिरो। थैंक यू। सो मैं आप लोगों को बता दूं, ही इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है, हु इज द फाउंडर एंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रे शेड्स। सो फर्स्ट यू नीड टू टेल आवर ऑडियंस व्हाट इज ग्रे शेड्स एंड व्हाट दे डू। So we are an organization working to build a platform, and I guess it's the vision what we are putting forward through the organization is that every senior is a gracious giver, ओके, and one enabling them to be a gracious giver, and other side the society need to celebrate the gracious givers. That aging is something which, like, everyone is aging from the day we are born. यस, So it has to be celebrated, it has to be joyous. Unlike what is we are seeing around, that after retirement life becomes difficult, but at the same time it comes with a ray of hope and like lot of hope that after retirement एक अलग life start होती है जो आपकी इच्छाओं की हो सकती है, जो आपकी happiness की हो सकती है, जो आपकी actually purpose follow करने की हो सकती है. Because बिल्कुल। till 60 you are busy doing your obligations and all responsibility. 60 you are free, you are financially independent, you can be much more than who you are before 60 after 60. सो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। मतलब जहाँ पे हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, उनकी लाइफ के बारे में कि आफ्टर रिटायरमेंट यू स्टिल हैव अ लाइफ व्हेन दे फील लाइक कि अभी कुछ भी नहीं है, देयर आर नो होप्स, दे आर लाइक दे ट्राई टू फाइंड वेज टू स्पेंड देयर टाइम when kids are also working, they are just sitting at home watching television and sometimes they are into very negative mode also. But ये idea इस young age में कैसे आया? How you have thought about this? I studied social sciences. Okay. I belong to Amritsar, and before that I had my childhood in our village, Chabal. Then we shifted to Amritsar. As a part of my studies, I went to lot of field visits, worked with the NGOs, and one of the I guess the impactful incident for me is going to Pingalwada Okay. and other old age homes in Amritsar. There are 9 old age homes back then. I don't know the exact number now. वहाँ पे जाके ये था कि I was angry and restless seeing that how people are facing end phase of their life. Okay. At the same time, I belong to a family where we lived in a joint. So my childhood was having 3 families living together, and elders were the main pillars for the family, 3 generations living together. And middle generation is going and working, but there is a close relationship between your grandchildren and grandparents. In the city, I witnessed that the system is changing, and the changing system does require lot of effort to respond to that situation. Okay. It started from old age home, but I learned that कि लोगों के जब basic needs, roti, kapda, makan is fulfilled, they have social emotional needs. जी. And then at the same time, I believe that every senior has a capacity to be remarkable. After 60 तो life बेहतर होनी चाहिए rather than कि वो difficult हो. Because you have so much of time and wealth of knowledge and experience. It's not the senior are failing, it's the society, and as a system we are failing that we are not giving them space to be remarkable. So what we thought, like, it would be really nice. So I don't want my elders to end up in old age home. I rather want, we are 4 siblings, 4 of us are not living with my parents, but I do dream that they should have that system around, that they have the capacity and then eventually be remarkable, impactful, and what we say gracious giver, because what they have is something very valuable for the society. Their time and energy and their capacity, they can bring goodness. Giving is not only money, but their time and energy for the social good and for the fulfillment of their own
self, And everybody wants recognition. and that has to be celebrated. Yes, that In is that celebration they will be recognized. सो वी हैव जस्ट आस्क्ड हिम कि अभी मतलब ग्रे शेड्स शुरू कैसे हुआ, थॉट कैसे आया, लेकिन अभी और भी बहुत सारी बातें करनी है. सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड. सो बेसिकली अभी तक की जो जर्नी रही है, अभी तक आपने ऑडियंस को बताया कि ग्रे शेड्स क्या है, किस तरीके से इसका आइडिया आया, लेकिन एक जो चीज़ है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एज फैक्टर, कि जब एक यूथ एक आइडिया के साथ सोसाइटी में जाता है, उसे बहुत लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि सबका सवाल सबसे पहला ये आता है कि अभी तक तुमने देखा क्या है, अभी तक तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन कैसे है, इतनी नॉलेज कैसे है. सो हाउ वाज दैट जर्नी फॉर यू टू कन्विंस पीपल? 4 भाई बहन है हम, मैं सबसे छोटा हूँ, तो कन्विंसिंग एज अ स्किल वी हैव लर्न फ्रॉम वेरी यंग एज. आई पर्सनली, बिकॉज यस, सवाल तो खड़े होते हैं, आज भी होते हैं. With the age I am also growing, I have my own milestone as a person. But while building this organization, when you have a bigger idea than your own self, sometime you like keeping that faith. Convincing is difficult, but it is not impossible. So True. that is happening so far, and I'm very sure and I have a great faith that it will, like, one day it has to be at a very large, stronger Scale. Yeah, scale. So I guess it's fun also. It's itself is very rewarding journey. So there are gains in another way also. So you enjoy the process. And being young, yes, I have been criticized because I have been working with the people who पूछते ही हैं तो आप क्या जानते हो? I'm working with the people who are 3 times older than me. But I feel कि where I belong to, this comes also. So मेरा पिंड चबाला, बाबा बुड्ढा जी ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ. He himself was a very influential in the Sikh history, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤਾਗਦੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ. So I feel something is it's beyond age. With seniors also we don't say कि like age ਨੂੰ consider करो. It's like God's grace. We can say it's a God grace, and by the grace of our elders also. Yes. ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ. For me it's more of by the grace of our elders, the stories we learn from our family. My father took care of my dadi for 22 years. She had cancer. So when I saw him doing this service as a first priority, तो फिर आप जब सोसाइटी में देखते हो कि दिस इज टोटली डिफरेंट विच इज हैपनिंग, तो एंड आई हैव अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली. सो बाय द गॉड ग्रेस definitely, but through the grace of my elders I am able to do. So true. So if I talk about your first time when you went out with this idea कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो पहली जो मीटिंग थी, जो वो पहला एक्सपीरियंस था when you were out and were talking to a senior citizen and telling them about this cause, so how was their reaction? मैंने बहुत इमोशनल समा फिर उनके साथ स्पेंड किया. सो माई फर्स्ट थिंग वॉज टू गो एंड विजिट ओल्ड एज होम एंड स्पेंड टाइम विद देम. आई स्टडीड सोशल साइंसेस, तो एक क्यूरियोसिटी था कि इनकी स्टोरीज को जाना चाह सके. मैं 1-on-1 कॉन्वर्सेशंस करता था. आई मेट 143 सीनियर्स अक्रॉस 9 ओल्ड एज होम्स इन अमृतसर. एंड 15 मिनट के बाद when लोग खुलना शुरू करते हैं, तो वी बोथ as a interviewer and interviewee end up crying. तो वो अपने आप में एक बहुत फाउंडेशनल स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेरा एक्सपीरियंस सा बन गया. देन इट इज़ अ नेवर एंडिंग. सो राइट नाउ वी कीप ऑन मीटिंग, बट एट द सेम टाइम वो एक अपना भी जर्नी ऑफ ग्रोथ रहा है, जहाँ पे सीखते आए हैं कि what are their needs, like putting shoes in the capacity of a person who is 80 years old. वो कैसे सोचते हैं, उनके क्या ख्वाहिशें हैं. तो they just need time. It's just like layers of onion. तो धीरे धीरे समय लगता है. तो but so what is that one thing जो you always carry with yourself, मतलब mentally, when you go and meet these people, और उनकी कोई एक ऐसी inspiring message या उनका कोई एक inspiring word जो आप हमेशा अपने साथ रखते हो when you work or when you go out for meeting these people? सो गाइज, अभी इंदर जी के साथ बातें और भी करनी है. सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2. वी विल शेयर इट रियली सून विद यू, बिकॉज अभी बहुत कुछ आने वाला है.